चलिए एक्सरसाइज का आंसर रिवाइज कर लीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजिनियस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स: एडेनिन, साइटिडिन, थाइमिन, गुआनोसिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। इसको बनाइए जल्दी से। मुजबानी मतलब कि ओनली फ्रॉम ओरल, ओरल केवल। Question number 2. If a double-stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percent of adenine in the DNA. Third, if the sequence of one strand of DNA is written as follows: 5 prime AT GC 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 third prime, write down the sequence of complementary strand in 5 prime to 3 prime direction. Which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesis semi-conservative mode of DNA replication? Explain. Depending upon the chemical nature of the template, that is DNA or RNA, and the nature of nucleic acid synthesized from it, that is DNA or RNA, list the types of nucleic acid polymerases. How did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is the genetic material? Differentiate between the following: A. Repetitive DNA and light DNA. B. mRNA and tRNA. Template strand and coding strand. List 2 essential roles of ribosome during translation. In the medium where Escherichia coli was growing, lactose was added, which induced the lac operon. Then why does lac operon shut down some time after addition of lactose in the medium? Explain in 1 or 2 lines the following function. A. Promoter. B. tRNA. C. Exon. Question 12. Why is the Human Genome Project was called a mega project? Question 13. What is DNA fingerprinting? Mention its application. Briefly describe the following. A. Transcription.
B. Polymorphism. C. Translation. D. Bioinformatics. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था 6.1 दी डीएनए। 6.1.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 6.1.2 पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। 6.2 द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। 6.2.1 The genetic material is DNA. 6.2.2 Properties of genetic material, that is DNA versus RNA. 6.3 RNA world. 6.4 replication. 6.4.1 The experimental proof. 6.4.2 The machinery and the enzymes. 6.5 Transcription. 6.5.1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 6.5.2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। 6.5.3 टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। 6.6 जेनेटिक कोड। 6.6.1 mutations and genetic code. 6.6.2 tRNA, the adapter molecule. 6.7 translation. 6.8 regulation of gene expression. 6.8.1 the lac operon. 6.9 human genome project. Goals of HGP. 6.9.1 silent features of human genome. 6.9.2 applications and future challenges. 6.10 DNA फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद चैप्टर का समरी। उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। उसके बाद चैप्टर खल्लास। लाइक ठोकिए, शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब तो ठोक ही कर जाइए।